ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Friends, if you rest, you rust. Remember this. Hello everyone. So I am now very simple topic. I am going to start the kinds of cells, types of cells. There are mainly two types occurs. The first is prokaryotic, and the second is eukaryotic. How to do your homework I will tell you later. अभी पहले पढ़ाई स्टार्ट की है हमने, बहुत ही कम आज हम पढ़ने वाले, बहुत ही कम। हाँ, so there are mainly two kinds: prokaryotic, eukaryotic cell. Let me write cell. Now the meaning of the prokaryotic, pro means primitive, which is not very well developed, which is underdeveloped, and you well developed. Carry on term, उसका इंग्लिश, कैरी ऑन का इंग्लिश न्यूक्लियस होता है. Nucleus is a part that lie in the center of the cell, right? So the cell which has primitive developed nucleus is known as prokaryotic cells. For example, bacterium. If there are so many, then we are to write down bacteria, plural. And the cell in which we find well developed nucleus is known as eukaryotic cell. We have to study eukaryotic cell as one typical plant cell plus animal cell. Okay, typical plant cell and animal cells. Why I have written a typical? Because whenever I will draw the plant cell, I have to draw each and every organelle, even if it can be observed in only one plant body. I have to put in this cell. For example, suppose I will draw, just after few minutes I will draw typical animal cell. Now see, if one animal, for example, one unicellular animal, suppose we take protozoans, paramecium or euglena. Suppose I find vacuole in it, then I have to draw the vacuole in these cells. But that does not mean that in our body, in our cell, there are so many vacuoles. Our cell does not contain vacuole, because vacuole, to have vacuole is the typical characteristic of a plant body. Okay, this you are to understand. Now first of all we have to go after, now what is the meaning of the primitive kind of the nucleus and well developed nucleus. So I will first of all draw well developed nucleus. Let me draw the well developed nucleus here. Okay, I am drawing two membranes of this nucleus. Very easy thing for you, even inner membrane and outer membrane of the nucleus. And there are so many pores which are called the pores of nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर आउटर, उसके अंदर पोर है, होल है, उसका नाम रखा pore of the nuclear membrane. Inside we find chromosomes, but it is available as chromatin material arranged in the form of the network, and one
constitutional part of this chromosome or chromatin material is DNA, which is called genetic material. अभी यहाँ से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई. हाँ, inside some of the substances. And without layer, nucleolus does not have any layer surrounding it. And when you draw this nucleolus, you are to attach it with the chromatin material. You can't draw it separately at any place. Remember this thing. I will prove later on why this so. Okay. So this is chromatin material. Or I have used the term is chromosome. But when I use term chromosome appearance is just like this. Okay. One centromere is there, two chromatids are there. Are you able to see this kind of the structure over here? No. But if I open this part and this thread-like parts, what I find? 3 components are there. One is DNA, that is deoxyribose nucleic acid. Second is RNA, that is ribose nucleic acid, and the third one is a protein. So the basic fundamental components are same, but I will tell you later on that when you can use term chromatin material and when you can use term chromosome. So here I have drawn the chromatin material. What you are to think, now think that this is a very small ball. वो जो दड़ी एक small आती है ना, it is just like a small ball. Having how many layer? 2 layer, and there are so many pores inside. Then put some of the water to it. This green color part having so many substances, right? And then take 46 smaller threads. Make a network, the bunch of it, and let this bunch to enter this. Okay. उसके अंदर one more smaller, एक छोटा वाला, just like a bead, एक दानो मुकी दियो नी अंदर. Okay. It is nucleolus. Now you can imagine this thing. The thing that which I have drawn in front of you, you are to imagine. कि मैंने यहाँ पर जैसा ड्रॉ भी किया ऐसा नहीं, वो कुछ अलग है ना. So what the thing I have drawn is, it's a section. It's a section. एक हमने दड़ी ली स्मॉल, उसके ऊपर एक लेयर लगा दिया तो 2 लेयर हो गया. उसके अंदर so many pores कर दिए. उसके अंदर 46 थ्रेड लेके, दोरा लेके 46 उसका वो घुचवाड़ा करके अंदर डाल दिया. उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया और एक स्मॉलर, एक छोटा वाला बीट. 1 or 2 nucleolus will be there inside. Okay. Now this each thread is made up of 3 parts: protein, RNA, and DNA. And the DNA is called its genetic material. So what we can understand that genetic material is a component of the chromosome, but chromosome itself is not a genetic material. Genetic material is a part of the chromosome or chromatin. So these kind of the chromosomes are available during the time of the cell division when the metaphase comes, and the cell which I have drawn in front of you is not in the metaphase. That is why I have drawn it in the form of the network. बहुत चीज़ ऐसी है, अपन लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, जेनेटिक मटेरियल, सब एक है. ये सब एक नहीं है, ये तीनों के तीनों अलग है. Okay, so it is very easy now. It is clear. Now this is called the well-developed nucleus. This is called the well-developed nucleus. Why? Because it is having 2 layers. Its material is packed within this layer. Okay. Now what happens in the prokaryotic? See, now I am taking the black color pen and I will draw only DNA. So the thing which I am actually drawing here is just the thread like DNA. Okay, this is genetic material.
The very simple way I am talking to you. Very simple thing, huh? So I have drawn one part, which is the part of this red color. ये जो रेड कलर के अंदर भी डीएनए होता है, ऐसा एक मैंने यहाँ पर डीएनए उठा के ड्रॉ किया हुआ है. ओके, so one of the component I have drawn, and now I will draw protein molecules. Now I will draw protein molecules. What these protein molecules do? Will not allow this DNA to separate from here. So this protein molecule keeps this DNA in bunch together. उसको bind रखता है, joint रखता है. That is why here it is protein molecule, right? So many things. Now this is called the nucleus of the bacteria. This is called the nucleus of the bacteria. So this nucleus does not contain the outermost periphery layer, whereas here you find the outermost layer. So this is not developed, this is highly developed. So this is underdeveloped, means primitively developed nucleus. That is why it is called prokaryon. And the cell which has such kind of the nucleus, this cell, it is bacterium. This is bacterium. Now one more thing, in case of the bacteria we find circular DNA too here, which is called plasmid. Which is called plasmid. We'll see later on the role of this plasmid, and in the 12th we will see the role of this plasmid, that it is important to form, to make, to synthesize vaccine. अभी कोरोना की वैक्सीन बनेगी तो इसकी मदद से ही बनने वाली है, इसकी मदद से. कोरोना इज वायरस, एंड दिस इज बैक्टीरिया. रिमेंबर दैट थिंग. आएगा. वेट, slowly we have to go after. So this is the circular DNA. This black color is also DNA. उसका वो गुच्छा गुच्छा हो गया है, ये सर्कुलर डीएनए. इट इज कॉल्ड प्लाज्मिड. इतना याद रखो सिर्फ. अगर आपको पूछा जाए कि भाई प्लाज्मिड क्या है, वेरी सिंपल आंसर यू हैव टू गिव. इट इज स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन prokaryotic cell, or what we can say bacterium. Plasmid is okay. Okay, what is the difference between the primitive nucleus and the well developed nucleus? Primitive nucleus does not contain nuclear membrane, whereas well developed nucleus contain nuclear membrane. Okay, now what we are to do, we are to go after this typical animal cell. So the outermost periphery is cell membrane. So let me draw the cell membrane here, and in the center automatically it is nucleus. Okay, shape, size vary from organism to organism, from amoeba to amitab. Okay, amoeba is a unicellular organism. So centrally located nucleus. Now I will draw its cytoplasm. This is actually cytosol, that we will see in the lesson number 14, but now you can call it as cytoplasm. Okay, substances which remain inside this periphery. इसका नाम क्या रखा है? Cell membrane, or it is otherwise known as plasma membrane. नाम याद रखते जाओ, नाम याद रखते जाओ. Inner membrane, outer membrane of the nucleus, or nuclear membrane, outer and inner. The pores of the nuclear membrane, chromatin material in the form of the network and nucleolus. जैसे ये सेल का सॉल है ना, साइटोसॉल, ऐसे ये न्यूक्लियस का है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वन मोर ऑर्गेनेल्स, one more organelle. I will have to start it from the cell membrane, and I will have to bring it up to nuclear membrane. यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो आप. I have drawn endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Endo inside, plasmic cytoplasm, reticulum. Just like its structure is just like network. Okay, having so many units, cisterns.
Now you will be surprised by knowing this and by watching this. Okay, so this is actually cut. Let me make it zoom. Okay, you are getting good. Now this is actually section. So remember the thing, this is actually section of the cell, right? So you are to imagine the 3D structure of the cells. Not to worry, अभी मैं ऐसे imagination करवाऊंगा. Okay, so these are called cisternae. It remain interconnected, and on this cisternae we find granules like organelle. These organelles do not have any layer. इसके पास कोई भी लेयर नहीं होता है. This organelle is known as ribosomes. Ribosome is concerned with the protein synthesis. Okay, and see, two kinds of endoplasmic reticulum is here. For example, the first kind is known as rough endoplasmic reticulum. Rough. Why this? So because यहाँ पर ये सब bead like structure जिनका नाम रखा है रिबोसोम से, तो if I will touch here, what I will feel rough. And this cistern, this endoplasmic reticulum do not have such kind of the ribosome, so its surface is very smooth, so it is called smooth endoplasmic reticulum, and this is called a rough endoplasmic reticulum. You can remember in a short way. I will give you RER, rare, rough endoplasmic reticulum. SER, SER, smooth endoplasmic reticulum. We will see in a detail when we will see the short note of ribosomes and endoplasmic reticulum too. Now this may be here only this much part, or it may be here only this much part. Remember that thing. ओके, यहाँ पर भी हो सकते, इतने में ही हो सकती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर इतने में या फिर इतने में भी हो सकती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मैंने एक ऐसी डेवलप्ड जो है वो यहाँ पर ड्रॉ की है. ओके, नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू. I have drawn the structure which is arranged right angle to each other. What is the name of this organelle? The name of this organelle, it is called centriole. उसका जो उपयोग है, उसका जो यूज है at the time of the cell division, we'll see. Centriole required for the synthesis of the bipolar spindle fiber. ये जो लास्ट वाला सेंटेंस अगर मगज में नहीं गया तो कोई बात नहीं, बिकॉज वो हमने साबित करना, उसके लिए एक लेसन रख दिया है ये एनसीईआरटी वालों ने. ओके, सो इसका नाम आना चाहिए. माय टुडेज गोल इज आई वांट यू टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनल ओनली नेम. फंक्शन भी याद न रहे कोई चिंता नहीं है. आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ द सेल ओनली. I am actually delivering the lecture in which you find only headings of the short notes. This is my main goal of today's lecture, so no need to worry. But see further, inner outer nuclear membrane, pores, chromatin material in the form of the network and nucleolus. Okay, endoplasmic reticulum, ribosomes and centriole. Okay, now I will draw नाम आपको बताना है भाई. You can tell me the name of this organelle. It is concerned with the production of energy. It is mitochondria. There are so many mitochondria. Now the total number of the mitochondria depends on which thing? As just before 1 minute I have told you that this is concerned with the generation of the energy. So the cells, those need more energy. For example, suppose sperm, because it has to swim, so it needs more energy. So there is a one compartment in the sperm in which you find only mitochondria. Now in the biology I can speak that it is concerned with the generation of the energy, but according to the thermodynamic law, energy can't be produced
उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो नाश भी नहीं होती है, उसका लो है. So here what is the meaning? What you are to understand? Mitochondria synthesize ATP molecules, and in these ATP molecules it is a deposition of the energy. So ATP molecule के पास energy उसके अंदर store हुई है. Actually when we speak that energy is generated in the mitochondria, we are actually want to tell you generation of the ATP, generation of the molecule that stores energy. Okay, so that you are to remember over here. Now I will draw one more organelle which generally locate nearer to this endoplasmic reticulum, and it has so many vesicle like structure. ये सब देख रहे हो, ये सब these are called vesicle, sac like structure. When this sac like structure, this is called Golgi body. When this sac like structure will become enlarged, and inside the filling of the so many enzymes occurs, so as it will become enlarged and will be liberated into the cytoplasm after getting detached from the Golgi body. Okay, inside remain so many enzymes. दिस इज कॉल्ड लाइसोसोम. इसका नाम क्या रखा? लाइसोसोम रखा है भाई. सो गोल्जी बॉडी वो लाइसोसोम का मम्मी हुआ. इट्स अ मदर ऑफ लाइसोसोम बिकॉज इट इज गिविंग बर्थ टू लाइसोसोम. इनसाइड द लाइसोसोम देयर आर सो मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम. These enzymes have ability to digest each and every organelle like this, and the nucleus too. So what will happen? As soon as this layer is going to be ruptured, these enzymes will be mixed with this cytoplasm and it will digest these all parts. As soon as all this organelle will be digested, the cell will die. So lysosome is known as suicidal bag. आत्मघाती अंगिका जिसको बोलते हैं ना, आत्मघाती organelle, it is called suicidal bag. Have you ever heard that in any normal person there is a rupture of the lysosomes, so as due to which उसका डेथ हो गया? ऐसा कभी सुना है? तो ये जो नेचर है उसका, सबका केमिकल डाइजेशन कर देना, वो सही है या फिर गलत है? वो सही है या फिर गलत है? वो सही नेचर है. वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड इट विल हैपन. हाँ, कैसे होगा? तो सपोज एनी सेल अंडरगो सेनेसेंस, मतलब वो जीर्ण वो हो गया, वृद्ध हो गया. Now that cell is not properly function for our body, it is not functioning for our body, and this cell takes some of the nutritional material, in turn it is not giving anything to our body. Why our body needs this cell? So the message is from this nucleus era is that now we are of no use. So rupture करो cell का पूरा chemical digestion. But at the time of the survival of this cell, suppose in the young age, what is the role of this lysosome? So whichever the bacteria or viruses are engulfed by these cells, कोई भी बैक्टीरिया वायरस है तो ये सेल उनको सपोज ले लिया, सपोज दिस इज अ WBC, then to digest the body of the bacteria or virus, this lysosome will fuse with it. Okay, that we'll see later on. So it is needed. Whichever the thing prepared in our body by the God, it is always useful. Okay. Now I will draw so many. These are some of the tubes and thread-like structure. Collectively together constitute cytoskeleton. So in the cytoplasm, in this whole area, there are some of the filaments and thread-like structure arranged all together. So this can be retained as such. This all together constitute साइटोस्केलेटन. अपने में भी स्केलेटल सिस्टम होती है तो अपना शेप ऐसे रहता है ना, तो यहाँ पर भी कुछ अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए ना.
So it is in the form of the some of the thread like structure and filaments, tubes. Okay, microfilament. So we will see the short note of the cytoskeleton also. One more thing, ribosomes are also found freely in the cytoplasm. It is also found freely in the cytoplasm. Ribosomes are also available in the mitochondria, and it is also located on the outermost layer of the nucleus. And when we'll talk about a typical plant cell, it is also present in the chloroplast. In case of the typical animal cell, I have told you the four location of the ribosomes: on the endoplasmic reticulum, number 2 in the mitochondria, number 3 freely available in the cytoplasm, and number 4, let me draw it here at 4 place, the red color ribosomes. So suppose today I will ask you one simple question there: which of the following is the correct location of the ribosomes? Okay, first, second, third, fourth option. In the first option I have to give 4 options: first name, second, third, fourth. First, endoplasmic reticulum, comma, freely in the cytoplasm, comma, on the nuclear membrane, then comma, what I have to write, mitochondria. बी में इनमें से 2 लिया, एक रख दिया सेंट्रियोल, दूसरा रख दिया न्यूक्लियोलस. सी में फिर से ये जो पहला वाला 4 वाला सही था उनमें से 2 लिया, 2 कुछ और डी में सब कुछ अलग अलग. द आंसर वुड बी ए. ओके, बट आफ्टर टुमारोज लेक्चर उसमें एक ऐड होगा. कौन सी वाला? क्लोरोप्लास्ट, which is concerned with the photosynthesis, means formation, synthesis of the glucose. वो भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएगा ना, तो वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा. ओके, नाउ there is one wonderful figure in front of you. Now I am giving the, as I have given 3D structure to this endoplasmic reticulum, at the same way I will give the 3D structure to this cell, animal cell. Okay, I have taken longitudinal section of it. Now this is the cell membrane, the outermost membrane. We are going to see the internal structure of the cell membrane. Huh? Now in some of the cells, whenever it is needed and wherever it is needed, tubular parts, the cell membrane will come out as tubular part. You can call this as villi. उसको क्या बोलेंगे? villi. Now this is generally necessary for making more and more surface area. अगर यहाँ से किसी को अंदर जाना है, यहाँ से अंदर जाना है तो इतना एरिया अवेलेबल है. बट इफ I will enlarge this in the form of the tube, now from here, anything can enter. तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा. सो दिस इज फॉर द एब्सॉर्प्शन. दिस इज वन काइंड ऑफ द एडेप्टेशन वी कैन से. तो वो एब्सॉर्प्शन के लिए ऐसा हुआ है. हर एक सेल के अंदर ऐसा नहीं होता है. आई कैन कॉल दिस ऑल स्ट्रक्चर एज माइक्रोविल्लाई. You already studied microvilli and villi. Villi is totally different. That I will tell you in the digestive system. But here it is microvilli. Microvilli you also studied in digestive system in the 10th I think. Okay. So इसका भी 3D स्ट्रक्चर होएगा. अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम अभी पहले इसके बाद प्लांट सेल में जाएंगे और उसके बाद दोनों का कंपैरिजन करेंगे. बट बिफोर दैट अ लिटिल बिट फर्दर रिवीजन एंड सम ऑफ द इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन एंड आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम,
mitochondria, cytoplasm, cell membrane, cytoskeleton, centriole, microvilli for the absorption, and this is the section of the cell. So each and every organelle you are to imagine in the 3D picture, but now only cell and endoplasmic reticulum too. Now here, shape, size, it's a function of the different kind of the cells differ. It vary from organism to organism. For example, suppose we'll talk about the size. There is a group, genus Mycoplasmas. In which pleuropneumonia like organism. My dear friends, इसकी जो साइज होती है ये बैक्टीरिया से भी कम होती है. बैक्टीरिया की कितनी है? 3 to 5 माइक्रोमीटर म्यू एम. कितनी है? 3 to 5. ये जो पीपीएलओ है उसकी है 0.1 म्यू एम. It is one of the example of mycoplasma, but in this mycoplasma it remain up to 0.3 μm size. There are so many. Now why इसका नाम क्यों रखा? Pleuropneumonia like organism, because it causes pneumonia in the human body. You will surprised by knowing that Streptococcus pneumoniae is the name of special kind of the bacteria those cause pneumonia in the human. इससे भी होता है, इससे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होता है. ये तो बहुत ही छोटा वाला है. इससे भी छोटा वाला कौन रहेगा? पीपीएलओ से. ये जो अपना कोरोना वायरस है ना, मतलब जो वायरसिस होती है, तो वायरसिस के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है. दे आर पुट अंडर वन ग्रुप विच आर कोल्ड एकैरियोट्स. एकैरियोट्स, कैरियंस मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट, राइट. हमने तो अभी लिविंग सेल का टाइप डाला. वायरसिस, अब ये थोड़ा सा आपको बता दो. वायरसिस व्हेन रिमेन आउटसाइड द बॉडी they are behaving like non-living, but as soon as it will come into contact with our body they start replication in our cells, so they are behaving like living. So viruses have both the features, one the features of the non-living and living. That is why they are called connecting link between living and non-living. This is some of the extra thing, and about the viruses we will see further. Now if we think about the size of the RBC, red blood not cells, corpuscles, when we are using the term for our RBCs we are to use corpuscles because our RBCs do not possess nucleus. उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, so उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस्कल, कण बोलेंगे. And when we will use term WBC, here the C stands for cells, white blood cells, because WBCs have nuclei. हर एक के पास एक एक होता है, अपना न्यूक्लियस होता है. ओके, सो इसका डायमीटर रहता है राउंड अबाउट 7 μm. 7 μm. If we think about our which is this cell? Our neuron, our nerve cell. Some of the neuron may have 1 meter length, वो 1 मीटर लंबा भी हो सकता है. ओके, और जो सबसे बड़ा सेल है, the largest cell is ostrich egg. It is written in our book, you can go through. Ostrich egg. हाँ, ostrich वो जो आता है ना, वो उड़ नहीं सकता, उसका जो अंडा होता है, it is a cell. Egg is actually cell. Okay. So now if we talk, this is about size. This 0.1 μm is given in our book NCERT. उसकी जो फिगर है उसके अंदर दी गई है, and the rest informations are given in our book.
This is also in the book, but it is given in figure only. So this is about shape, this is about size. Now if we go after the shape, shape is also variable. Neuron, if I draw muscle cell, involuntary muscles, those which lie in our internal organ, it is spindle shape. Okay, but those muscles which lie on our skeletal system, it is cylindrical, having striation, मतलब उसके अंदर डार्क लाइट बैंड होगा. If we think about WBCs with irregular in shape and nucleus may be bilobed, I have drawn bilobe, first and second. bilobe nucleus हो सकता है, ट्राइलोब भी हो सकता है, एस शेप का भी हो सकता है. The nucleus may be round or horseshoe shape. So 5 different kinds of the nucleus occur in the various WBCs. So there are 5 different kinds of the WBCs. हर एक के अंदर अपना अपना अलग अलग एक न्यूक्लियस होता है, उसका शेप अलग अलग होता है न्यूक्लियस, मगर WBC जो भी हो उसका शेप इरेग्युलर होता है. Some of the cells may be polygonal, some of the discoid, different. If we think about trachea you know, it is also elongated and pointed, and inside we find thickening. What is the meaning of thickening? That I will tell you, not now, when the time comes. But thickening is in a simple way, it is a deposition of some substances, deposition, अंदर भरा हुआ है. Okay, and if we think about the cells of the plant leaf, those which lie in between the upper and lower layer, it is called mesophyllous tissue cells. And the cells will have so many chloroplasts, generally located at the peripheral side. These are the chloroplasts required for the synthesis of the glucose, chloroplast. Okay, if we open our one epithelial tissue, the cell may be cuboidal or columnar. I will draw columnar epithelial tissue cell. ये उसका nucleus. Generally nucleus generally lie in the center region or below the center region. Okay, so this is narrower, but it is longer, right? So different shape, different size occurs of the different cells even in our body. ये इनमें से अपने बॉडी का सेल न्यूरॉन है, मसल सेल है, इनवॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी, WBC, और ये भी है ना इलोंगेटेड वाला, वो थोड़ा सा ऐसा, इट इज कॉल्ड कॉल्यूमनार सेल, कॉल्यूमनार एपिथेलियम. ओके, तो वो थोड़ा सा लंबा होता है, कई सेल लंबा होता है और टेपरिंग एंड वाले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नीडल की माफी. सो इन केस ऑफ द प्लांट बॉडी, इन केस ऑफ द एनिमल बॉडी, the shape, the size, this vary from tissue to tissue and from organ to organ. Okay, so my dear friends, today we have gone through an overview of the cell, but it is not finished yet because I have left a typical plant cell. So if you want to read, then you can go through the topic. उसका heading क्या है? An overview of cell. ये जो heading के अंदर आपको जाना है, उनमें जो भी प्लांट की लाइन आएगी वो आपको पढ़नी नहीं है. सेल वॉल आएगी तो वो आपको नहीं अभी पढ़नी है. इसके अंदर जितना है वो सब आप एक बार इफ़ यू विल गो थ्रू वंस, आपको मालूम हो जाएगा कि ओके ऐसा है. हाँ, तो अभी ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर है उसके अंदर हम जाएगा तो बहुत ही स्लोली जाएगा. मेरा लेक्चर की लेंथ भी 1.5 या 2 घंटे की नहीं होगी, मैक्सिमम 1 आवर, मैक्सिमम 55 और 60 मिनट, और
more than or sometime only 70 minutes, but not more than that. Okay, because basic, I want you to create your basic very strengthen, very fit, right, very strong. You must be fit in your, you must be uh, hyper whenever you are getting the knowledge of any subject. You should be in hyperactivity, your mind should be in hyperaction, then and then you are going to get something, otherwise not. If you become very lazy, ओके होता है चलता है, ये लेक्चर तो डिलीवर हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। मैं जैसे ही जा रहा था लेक्चर के अंदर, ये ऐसा है ऐसा है वैसा है वैसा है, आपको भी मेरे साथ ऐसे ही रहना है माइंड से, आपके माइंड को थकने नहीं देना है। यू मस्ट बी फिट फॉर दैट, यू मस्ट बी स्ट्रांग फॉर दैट। ओके, ये तो अभी हमने सिर्फ शुरुआत की। इसका इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा नीट में, व्हाट डू यू थिंक, नो इट इज ओनली ABCD, इट इज ओनली ABCD फॉर द नीट। ये तो आना ही मांगता है। ये सब फिगर्स अपनी टेक्स्ट बुक में दी। अभी आपको करना क्या है, लेट मी टेल यू वन थिंग। ओके, लेट मी बैक टू नॉर्मल। होमवर्क ये सब कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू परचेज वन बुक, देन you also must have at least 4 colored pen, as I have got 4 colored pen. I have other pens too of so many colors. I am going to use it. I have so many colored pen, I am going to use it. Okay, बहुत सारी कलर वाले पेन है। At least each of you must have 4 colored pen. अभी नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, ये सब कलर पेन से एक बार ड्रॉ करना है, साथ में नाम लिखना है। चलो बोलो, इसका नाम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन मटेरियल, you can write even chromosome, no need to worry. After that, this is mitochondrion, न्यूक्लियोलस, राइट। अभी चलो, इसका नाम क्या रखोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रेड कलर का नाम क्या रखोगे, रिबोसोम। ओके, यू आर गेटिंग मी। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, cytoplasm, cytoskeleton. This all the names are given in your book. You can download the NCERT textbook from its site. Okay, and you are to do it because अभी हमारे पास परचेस करने के लिए बाहर नहीं करना तो मना है, ये सब लॉकडाउन है। तो माइक्रोविलाई और द एब्सॉर्प्शन, राइट, ये सब नेमिंग आपको करना है। और जो टिपिकल एनिमल सेल आपकी टेक्स्ट बुक में, जिसकी वो जो टेक्स्ट बुक के अंदर फिगर है, वो एक बार सिर्फ देख लेनी है कि भाई इसमें टिपिकल एनिमल सेल में कोई नाम बाम है कि नहीं है। हाँ, अभी आपका होमवर्क क्या है? Now some of you are watching me on the mobile screen, some are watching me on the TV screen. अगर आप मोबाइल स्क्रीन के अंदर मुझे देख रहे हो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता है तो मैं यहाँ से हट जाऊँ, उसके बाद आपके पास दूसरा तो मोबाइल होगा ही, क्योंकि घर में तो रहता ही है। वो मोबाइल से इसका एक शॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है इसका। ओके, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा 1-2 मिनट तक के लिए। और अगर आप ये मेरा लेक्चर अगर लैपटॉप के ऊपर देख रहे हो तो अपने मोबाइल में से एक स्क्रीनशॉट ले लो। आफ्टर टेकिंग दिस स्क्रीनशॉट, व्हाट यू आर टू डू, यू आर टू
draw this whole my board work. This is called board work, my dear friends. This is the most important part. Board work you are to draw. So we will start by writing types of cell, prokaryotic, eukaryotic. As soon as you start, what actually you are doing? Revision of this lecture. When you write this prokaryotic, certainly you will come to know that okay, pro means primitive, carrion means nucleus. Okay, तो जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव काइंड का होता है, अंडर डेवलप, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। ये सब आपको माइंड में आएगा। जब आप ये ड्रॉ करोगे माइटोकॉन्ड्रियन, आपके माइंड में आएगा ना, ये माइटोकॉन्ड्रियन ओके साहब ने कुछ एनर्जी बोला था, एटीपी बोला था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब आप ये क्रोमेटिन मटेरियल ड्रॉ करोगे, आपको कुछ आएगा कि वो साहब ने कहा था इसमें आरएनए होता है, उसमें डीएनए होता है, उनमें प्रोटीन होता है, एंड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ इट। ओके, तो अगर ये सब माइंड में आए तो ऐसे धीरे धीरे लिखते रहना है कि भाई चलो ये हमने लिखा है क्रोमेटिन मटेरियल, तो उसमें हम डीएनए लिख देते हैं, हो जाएगा ना। आरएनए भी लिख सकते हैं और प्रोटीन भी लिख सकते हैं। हालांकि ये सब बात अगले लेक्चर में बोर्ड वर्क के साथ आने वाली है। अभी जो न्यूक्लियस की शॉर्ट नोट आएगी ना, न्यूक्लियस की शॉर्ट नोट अपन लोग देखने जा रहे हैं एक लेक्चर तक। एक लेक्चर में सिर्फ ये न्यूक्लियस ही चलने वाला है। ओके, तो ये हर एक हेडिंग है, जो भी लेसन है वो तो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पढ़ाई की, उसके बाद राइबोसोम की पढ़ाई करो, उसके बाद गोल्जी बॉडी की, उसके बाद लाइसोसोम की, ये सब की, ये हर एक टॉपिक है। बहुत सारे माइक्रो बॉडीज भी रहते हैं इनसाइड, उसकी तो सिर्फ 2-3 लाइन दी गई है, यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। माइक्रो बॉडीज, स्मॉल पार्ट्स। तो अभी आपको करना क्या है, इसका ड्राइंग स्टार्ट करेंगे आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको देख देख के आप इसका ड्राइंग स्टार्ट करें। कैसे करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, यू आर टू फॉलो मी ना, आई एम योर टीचर ना। तो पहले न्यूक्लियस ड्रॉ करो, उसके बाद मेम्ब्रेन, उसके बाद अंदर अपनी तरीके से करो, कोई भी बात नहीं, मगर ध्यान में रखने की बाबत कौन सी है, सेंट्रियोल मस्ट बी नियरर टू न्यूक्लियस। गॉट माय आइडिया? दिस starting from the nuclear membrane to cell membrane. Golgi body must be nearer to endoplasmic reticulum, and lysosome you can keep somehow nearer to Golgi body. Okay, बाकी जहाँ पर ड्रॉ आपको करने करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सब का साइंटिफिक रीज़न है कि भाई ऐसा क्यों रहता है, ये सब आएगा ना साइंटिफिकल रीज़न। तो ये सब ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो। ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दिस इज़ गिवन इन अवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। Now first thing is that you are to follow NCERT textbook. Second thing is that whichever the extra thing I am going to tell you, I will give it to you in writing. वो भी आपको करना पड़ेगा। अभी आपको NCERT की टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लेनी है 11th की, वो उसकी साइट में से मिल जाएगी। NCERT लिखो, गूगल में सर्च करो, मिल जाएगी। ओके, तो अभी होमवर्क क्या लाना है, ये जो आपने एक बुक ली थी उसके अंदर ही आप बोर्ड वर्क कर लो। आफ्टर दैट एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, ये बुक में जाके थोड़ा सा पढ़ लो, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद एक पेज लो, पेज के ऊपर अपना नाम लिखो, अगर रोल नंबर दिया गया है तो वो लिखो। आफ्टर राइटिंग योर नेम, रोल नंबर, डेट, you will have to draw this figure, this whole board work without watching the board work which you have. तो ये याद रख के करना है ऐसा। और when you are doing the board work, you are to think about each and every part of the cell. मैंने क्या बोला था, जस्ट रिकॉल करो। अगर वो सब ना है तो आपने जो पढ़ाई की एन ओवरव्यू ऑफ द सेल में, उसको सिर्फ रिकॉल करो। बट होमवर्क must be done without seeing your previous board work or your textbook. ये एक मेरी शर्त है, होमवर्क याद रख के करना है। अभी आज तो होमवर्क में सिर्फ बोर्ड वर्क ही दिया है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क एंड यू कैन स्टार्ट नाउ योर स्क्रीनशॉट और इसका बोर्ड वर्क।
I will give you 2 minutes only 2 minutes.